Good morning, dear children. I am Bharti Kathuria Sehgal from the SD Vidya School. We were discussing about Gregor Johann Mendel's contribution to genetics. We already discussed about Mendel's first law, the law of segregation. And we also discussed about the concepts of dominance and recessive alleles. Now, we start with the Mendel's second experiment, on the basis of which Mendel gave the second law of inheritance, which is called the law of independent assortment. So let's start. In this experiment, Mendel performed a dihybrid cross. I told you in the previous video, in the first experiment, Mendel performed a monohybrid cross, in which I told you monohybrid means studying one character at a time. But when Mendel was studying two characters at a time, the inheritance is called as dihybrid inheritance. So he chose two pairs of contrasting characters. The two characters he chose were shape and color of seeds. So what he chose was round and wrinkled seeded plant and green and yellow colored seeded plants. So the contrasting characters, round and yellow seeds and wrinkled and green seeds. At first, Mendel crossed pure breed pea plants having round yellow seeds with pure breed pea plant having wrinkled green seeds. So पहला experiment जो किया गया वो pure breed pea plant का था. Now you understand the concept of pure breed, जिसे हम कहते हैं homozygous, जिसका मतलब है दोनों alleles एक जैसे है. So इसका मतलब है अगर round yellow seed लिया है तो दोनों ही alleles कैसे होंगे? With the having of round character. Yellow seeds means they both alleles will code for yellow color. Pure breed of wrinkled seed means both alleles of wrinkled, दोनों के दोनों alleles wrinkled के लिए ही कोड करेंगे और green का मतलब है दोनों के दोनों green color के लिए कोड करेंगे. Now look here. So here we have capital R, that means round is dominant. Yellow is represented by capital Y, that means yellow color is dominant. And in the other plant, the characters are wrinkled. Because round is the dominant character, so we have taken here the alphabet capital R. And its opposite character, contrasting character, will be marked by the lowercase letters, small r. ऐसे capital Y will represent yellow color of seed and small y will represent the green color of the seed. So यहाँ पर देखेंगे आपके पास किस तरह का आ जाएगा, genotype आ जाएगा आपके पास. Now what is genotype? Genotype means नाम से पता चल रहा है genotype. Type of genes in a plant is called as genotype. So ये जो आप देख रहे हैं, this is called as the genotype. ये इसका genotype है कि इसमें किस तरह के genes है. RR, small yy is the genotype. But it has wrinkled seeds with green color is what we can physically see. So this is called as the phenotype. On the basis of the genes an organism possesses, it has the physical traits that we call as the phenotype. So look here, the round and the yellow that you see are the physical traits that are visible traits, and we call them as the phenotype of the plant. This is what is given in the NCERT textbook. So look here all of you carefully. He has taken in the first generation, Gregor Johann Mendel has taken in the first generation round seeds with green color and wrinkled seeds with yellow color. When these were crossed, only one allele will be passed on into the gamete. So the gametes will have one copy of each one of them. So it will have one copy of the gene for the seed color and one copy of the seed shape. So the gametes now will have capital R, small y. From the other plant, the gamete will have
small r capital Y, where small r denotes wrinkled shape of the seed and capital Y will denote yellow color of the seed. In the F1 generation, we will obtain both of them, that is capital R, capital Y, small y, which will represent the round and the yellow seeds. That means capital R is the round colored, so it will express itself because it is dominant. Capital Y is also obtained, which is yellow in color and will express itself, so it will be expressing itself and will be shown. So the phenotype will be round and yellow. Genotype will be capital R, capital Y, small y. So सबसे पहले कराया है उसने क्रॉस पॉलिनेशन between two different pea plants which are homozygous. लेकिन अब कंडीशन कैसी आ गई है? हेटेरोजाइगस कंडीशन है, जिसमें आपके पास क्या आ गया है? राउंड और येलो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन जीन्स किस तरह के हैं? राउंड के लिए भी है, रिंकल्ड के लिए भी है, येलो कलर के लिए भी है और ग्रीन कलर के लिए भी है. So this generation that is obtained is the filial one, as we discussed, F1 generation. Now after this, he allowed the plants of F1 generation to crossbreed by self-pollination. So there was a self-pollination between these two different types of plants. Now after the self-pollination, what he obtained? He obtained different types of plants. Some of them showing round seed shape but yellow color. Others were showing wrinkled seed shape but yellow color. Some others were showing green colored seed with round shape, and others were showing wrinkled seed with green color. This was the filial 2 generation, in which the ratio obtained was 9:3:3:1, in which 9 are round yellow, 3 are wrinkled yellow, 3 are round green, and 1 is wrinkled green. So in first step, he performed cross-pollination. In the second step, he is performing self-pollination. And what he has obtained is a totally different set of phenotypes in the F2 generation. The result of dihybrid cross enabled Mendel to formulate the second law of inheritance, called as the law of independent assortment. Now, what is this law of independent assortment? Independent assortment का मतलब बेटे ध्यान से सुनेंगे. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कोई कैरेक्टर किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, हर कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो कर रहा है. ग्रीन कलर के साथ मेंडल ने कॉम्बिनेशन लिया, येलो या ग्रीन का उसने अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए दो अलग अलग प्लांट्स में. ग्रीन कलर के साथ कॉम्बिनेशन था रिंकल्ड सीड का, इसी तरह से येलो कलर के साथ था राउंड सीड का. लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में उसको क्या मिल सकता है? देयर कैन बी न्यू कॉम्बिनेशंस व्हिच कैन बी फॉर्म्ड, व्हिच कैन बी राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन. दैट मींस रिंकल्ड और राउंड आपस में कोई, रिंकल्ड और येलो आपस में कोई रिलेटेड नहीं है, इकट्ठे नहीं है, कोई जुड़े हुए नहीं है, कोई भी किसी के साथ भी कैरेक्टर जा सकता है. आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, हम अपनी ही ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करते हैं. सपोज करिए कि फादर के ब्राउन हेयर और ब्लैक आईज हैं, मदर की ब्लू आईज हैं और ब्लैक हेयर है. अब ये जरूरी नहीं है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, हो सकता है कि बच्चे के पास क्या हो, ब्लू आईज हो और ब्राउन हेयर हो. So there can be new combinations which can be formed. This is called independent assortment. Characters एक दूसरे से independently assort हो रहे हैं, किसी character को किसी character पर dependency नहीं है. So according to law of independent assortment, in the inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously,
The factors responsible for each pair of traits are distributed independently to the gametes. So look here, round yellow in the first generation, in the parental generation he has taken, the wrinkled green जब क्रॉस किया है तो क्या आ रहा है हमारे पास, कॉम्बिनेशन सारे के सारे आ रहे हैं राउंड येलो. क्यों? क्योंकि राउंड डोमिनेंट है, येलो डोमिनेंट है, तो ये जो रिसेसिव है ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में क्या आ गया, सभी ने अपने आप को अलग अलग कॉम्बिनेशन बन गए यहाँ पर, और अलग अलग कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, यहाँ पर अलग अलग गेमीट्स बने. देखिए गेमीट्स किस तरह के बन सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई हो सकता है गेमीट में, या कैपिटल आर स्मॉल वाई भी हो सकता है, या स्मॉल आर कैपिटल वाई हो सकता है गेमीट में, या स्मॉल आर स्मॉल वाई हो सकता है गेमीट में. तो यहाँ पर अगर सेल्फ पॉलिनेशन करवाई जाए तो क्या होगा अब नेक्स्ट जनरेशन में. लुक एट दिस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गेमीट्स formed in each one of the plant and new combinations will be formed. So RRYY, because it has round and yellow both dominant, so it will be round yellow. Round yellow. See यहाँ पर इसके पास कैरेक्टर रिसेसिव भी है लेकिन रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करेगा. दोनों ही रिसेसिव हैं तो एक्सप्रेस करेंगे, कलर विल बी ग्रीन. दोनों ही यहाँ पर देखिए रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर आ गए हैं तो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, एंड द सीड विल बी रिंकल्ड ग्रीन. So this is what is given in the NCERT textbook. So look at this Punnett square. So graphical representation जो हम कर रहे हैं क्रॉस की, that is called as Punnett square. So Punnett square में देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गेमीट से आया है, दूसरे पेरेंट से गेमीट आया है कैपिटल आर कैपिटल वाई, आपस में क्रॉस किया, दोनों पेयर आ जाएंगे यहाँ पर आपके पास, तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. बेटे कभी भी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दोनों एक ही कैरेक्टर के जीन्स हैं, इसलिए हमेशा इकट्ठे लिखे जाएंगे. यहाँ पर आर वाई वाई लिखा जाएगा, कभी आर वाई नहीं लिखा जाएगा. प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, कभी भी आर वाई नहीं लिखा जाएगा, दोनों हमेशा इकट्ठे लिखे जाएंगे. सो आप जीनोटाइप जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, आर वाई. सो यहाँ पर आप देखिए दिस गेमीट इज फ्यूजिंग विद दिस वन, आर कैपिटल वाई आर स्मॉल वाई, फ्यूजन हुआ, दोनों कैरेक्टर्स आ गए यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ ग्रीन कलर स्मॉल वाई जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो कलर कैसा रहेगा, येलो रहेगा. तो इसी तरह से ये सारा का सारा आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाएंगे जो हमारे पास रेशो देंगे 9:3:3:1 की रेशो. ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू द प्रोजेनी. प्रोजेनी मीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन में किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वो किसके थ्रू होते हैं, जीन्स के थ्रू होते हैं. सो कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द जीन्स. जीन्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज अ जीन. अ जीन इज अ पार्ट ऑफ द डीएनए. देखिए डीएनए का ही एक पार्ट है विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन, जो प्रोटीन के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर रख सकता है, दैट्स कॉल्ड एज अ जीन कहते हैं उसको. सो जीन की लोकेशन कहाँ है, जीन इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम. व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए व्हिच इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल एंड फीमेल दो अलग अलग तरह के सेक्सेस होते हैं, और सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है फादर के जीन्स पर, बिकॉज फादर के अंदर दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एंड वाई, जबकि मदर फीमेल्स में सिर्फ एक ही टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्स एक्स. सो मदर से एक्स एक्स गेमीट्स में आएंगे जबकि फादर से एक्स या वाई कोई भी आ सकता है. सो द न्यू जनरेशन फॉर्म्ड विल डिपेंड अपॉन द क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर एंड नॉट मदर. acquired traits, the traits that we acquire during our lifetime, जो हमारी lifetime में हम acquire करते हैं traits. आपने क्या पढ़ाई की है, किस तरह की बॉडी आप लोग मसल्स बना रहे हैं, ये सब हमारे acquired traits हैं, ये आगे पास ऑन नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं they are called inherited.
और वो आगे पास ऑन हो सकते हैं।